पैर की बोन से कट की आवाज क्यों? वो कट की आवाज क्यों आती है? गैस वहां पे जम जाती है और वो जो निकलती है तो फिर वो कट की आवाज आती है। तो आपके शरीर में हर जगह डिटॉक्सिफाई तो हर से एक सेल को करना ही है। जिसको भी जिंदा रहना है उसको अपनी गंदगी निकालनी। तो गंदगी कहां से निकालती? यूजुअली ब्लड प्यूरिफाई करता है। हमारे सेल्स में ब्लड जाता है, मगर ब्लड ज्यादातर गैसेस चीजों को, थोड़ा बहुत सॉलिड चीजों को प्यूरिफाई करता है। Apart from that, what happens? Have you seen in Indian colonies what they do? अपना कचरा घर का निकाल के वो गली में डाल देते हैं, है ना? तो there is a सफाई वाला which comes and collects that गली वाला कचरा and goes out. Similarly, our body also does. Every tissue, every cell actually drops the toxin outside the cell wall. But you know, for blood, there is a pumping mechanism. Your heart is a pumping mechanism which keeps the blood flow. But the lymph, which the other toxin which the cell throws out from the cell wall, उसके लिए तो कोई pumping organ नहीं है ना. So your movement detoxifies you. जिस समय आपने मूव करना बंद किया, आपका शरीर में टॉक्सिन भरने लगता है. So it is your movement which detoxifies you. And also, we also tell in the class how to make it more effective. If you do not move too much, or if there is a gap somewhere which got built due to degeneration, then this toxin will also accumulate there. It will cause swallowing, inflammation, reddishness in that area. And gases also will collect there. And if you move, the gases move from that place, which makes a sound. तो साउंड से घबराने की जरूरत नहीं है. If there is a pain there, then there is something to worry. Also, you need to detoxify yourself a little more. We have something called as Hatha Vinyasa and Anganyasa, which we teach, which helps in detoxification of your body in a very powerful way. Also, we suggest certain other things to detoxify your body. So it is built in the program.